सो फ्रेंड्स, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन यूज डीएलपी। सो डीएलपी का यूज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें डाटा का शेयरिंग होता है, लाइक यू कैन सी हियर द चैट के थ्रू, सर्वर्स के थ्रू, क्लाउडिंग के थ्रू, आईएसपी, मोबाइल्स, यूएसबी डिवाइसेस का हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू, ईमेल के थ्रू। ये सारे डिवाइसेस का हम यूज करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो इसमें जो है हमारा डाटा का फ्लो भी होता है, हम शेयरिंग करते हैं मेल के। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन इसलिए यूज करती है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है किसी भी माध्यम से हमारे बाहर जो है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज के बाहर ना जाए। सो ऑर्गेनाइजेशन यूज डीएलपी फॉर प्रोटेक्ट पर्सनली identifiable information PII and comply with relevant regulations. Second is protect intellectual property critical for the organization, achieve data visibility in large organization, secure mobile workforce, and enforce security in bring your own environments, secure data on remote cloud system. So these are the features why we are using or in organization DLP. So DLP is a data leak prevention and too many tools available. One of the more known tool is independent uh, data leak prevention, that is the use in organization. So friends, if you like this video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching this video.